Hello guys, good morning. Good morning all of you. So in previous session we discussed about the IAM user options. We do have different options for the user. So we just gone through all the options that are available. So tell me guys, how many access keys can I generate? Whether it could be active or inactive. Maximum how many access keys I can generate? Two. If I lost a key pair, so can I get back the same key pair again? If I lost the key pair, can I get the same key pair again? No. Yes, we cannot get the same key pair again. So can I regenerate access keys multiple times? Can I generate the access keys multiple times? Yes. So n number of times I can generate a new access keys. N number of times I can generate a new access keys. New access keys. So if you want, you can generate a multiple number of access keys, multiple number of times, but not the same access keys, not the same access key. So, so if user has a console access of administrator access, console type of access with the administrative permission, so access keys will also have the same permissions or not, guys? Access keys will also have the same permissions, yes or no? सो एक्सेस कीज आल्सो हैव द सेम परमिशन. तो जो भी परमिशन होगा वो सेम परमिशन आपको एक्सेस कीज को भी मिलता है और कंसोल एक्सेस को भी सेम परमिशन आपको मिलता है, राइट? सो देर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन द कंसोल एक्सेस एंड द एक्सेस कीज. बोथ आर same type of permissions. And if I remove the permission from the permission tab, then access keys and also the console access both will be removed with the permissions. So no one can do from the console and also from the command line or the programmatic way. So for using the access keys, you must be using a command line interface, CLI, or you can use a programmatic access, programmatic access. So if one more thing here. So if in production, if you want to delete the access keys, if you want to delete the access keys, what will be your first step towards deletion of the access keys? So are you directly going to delete the keys? No, you will never ever go and delete the keys in the first step. You will first disable the keys and wait for something to happen. If nothing is happening, then you can go ahead and delete the keys. That is called as you are following the best practices. You are following the best practices. So never ever delete the keys directly. Just first deactivate the key. Whenever you deactivate the key or inactive the key, then no one can access the keys. Correct, guys? If you inactive the key, no one can access the resources in the AWS. No one can access the resources in the AWS. So from where you will get all the users information about when they last sign into the console, when the password last accessed, MFA is enabled or not, everything that is access keys, from where you will get this all information, guys. So if you want that into Excel sheet, so what is the process from where you will find that thing? You want all users, all information. You will be downloading the credential report of users. Credential report of users. So how many maximum MFA that one user can have? How many maximum MFA that one user can have? Remember guys, one user can have up to maximum 8 MFA. How much? 8 MFA. So you can have per user 8 MFA for your user. Okay, this is user based, right? So one user can have multiple MFAs till 8 MFA you can have. So about 8 is not allowed, the 8 MFA is there. So how many policies that can attach to a user? Maximum policies that I can attach to the user? 10. How many policies that I can attach to a group? Okay.
10. So if user has a permission of S3 full access, if that user got added to a group, so will that S3 full access permission will be lost or it will be there? It will be there. That permission will not be lost. It will not lose his permission, right? So the permissions that user already has, those permissions won't get affected. Only the new permissions from the group will be inherited. Yes, guys, are you getting all the scenarios here regarding the user? Yes. So if I want to see that what services that user can access and what are the services that user last accessed, this information, then from where I can get this particular information? I want to see that what are the services that user can access and when those services were last accessed. No, we already saw that thing. So यूजर को कितना परमिशंस है और वो कौन कौन सी सर्विसेज यूज करता है प्रीवियसली, दैट यू नीड टू सी. So please remember guys, so the answer for this is access advisor. What is the answer guys? Access advisor. देखो नाम में ही है, एक्सेस कितना चाहिए उसका एडवाइस दे रहा है वो, राइट? सो एक्सेस एडवाइजर इज like option in the users tab which gives you that what are the services that user can access. पहले तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है आपको कि कितना सर्विसेज वो यूजर एक्सेस कर सकता है. S3, EC2, VPC, जो भी सर्विसेज का नेम्स सर्विसेज है जो भी यूजर एक्सेस कर सकता है उसका इंफॉर्मेशन पहले तो वो देता है. सेकंडली इट विल गिव यू दैट व्हेन दो सर्विसेज वेर लास्ट एक्सेस, मतलब लास्ट कब वो एक्सेस हुई थी, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले. आई थिंक वी डिस्कस दैट थिंग, राइट? So just let me share that screen for you so that you will get an idea. Yes. Are you getting there? Access advisor. Look at here that user can access and when those services last access. So this particular information you will find from the users tab under the access advisor. What access advisor will inform you about the services that user has last access and the services that user can have access to. मतलब सर्विसेज को उसको एक्सेस है. इफ यू सी हियर EC2 को एक्सेस है. Yes, when the service last access, today only, today only. Yes, today only I access the EC2. Just I opened the tab for the EC2. That's why it is saying me that EC2 has been accessed. S3 अभी अभी मैंने वो भी S3 का भी टैब ओपन किया था. वेट, S3 का टैब अभी जस्ट ओपन किया था. So that's why it is showing me the S3 that I accessed today. So yesterday, what are the services that we accessed? IAM Identity Center. So some of the services that are related to some other options. So that's why they are saying that these are the services that I last accessed. Then support भी हमने देखा था, service catalog देखा था. So for that CrowdTrail, देन कॉन्फ़िग नहीं है ये, कॉन्फ़िग तो ऑटोमेटिकली कुछ होता है. तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग हियर. देन कोड पाइपलाइन, वी डिस्कस दैट आल्सो. देन 3 days ago वी डिस्कस सम मोर सर्विसेज. सो जो भी सर्विसेज ये यूजर एक्सेस करता है, दैट यूजर हैज एक्सेस एंड द सर्विसेज which are allowed that which are allowed for this user. दो चीजें होती है कि कौन कौन सी सर्विसेज यूज कर सकता है. जस्ट लेट मी कंफर्म दैट. ओके, ऐड यूजर. सो S3 यूजर. ओके, S3 यूजर नाम से हम बनाएंगे इसको. एक कस्टम पासवर्ड देंगे हम इसको, ओनली 6 times 1. नेक्स्ट, इसको सिर्फ हम लोग S3 की रीड ओनली परमिशन देंगे. S3 की रीड ओनली परमिशन देंगे. नेक्स्ट, एंड क्रिएट यूजर. नेवर, just go ahead and see. Okay, so return to the user list. It is showing me some disclaimer that आपने डाउनलोड नहीं किया है यूजर पासवर्ड वगैरह, तो इफ यू कंटिन्यू यू कैनॉट रिट्राइव द पासवर्ड, राइट? तो पासवर्ड भी आपको नहीं दिखता है कंसोल में. यस, सो पासवर्ड इज सिक्योर्ड. यू कैनॉट सी द पासवर्ड गाइस, है ना?
सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाने के बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे दिखता है क्या? द सेम वे द एक्सेस कीज यू कैन नॉट फाइंड, द सेम वे पासवर्ड इज ऑल्सो नॉट एबल टू सी फ्रॉम द कंसोल। तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो बट यू कैन नॉट सी द पासवर्ड, व्हाट इज द पासवर्ड राइट नाउ। So one more thing that we need to discuss here is the access advisor. So if you go to the access advisor, this is the newly created user. So what are the services that particular this user is allowed to do is the S3, and one more is the S3 object lambda. तो S3 के अंडर ही आती है ये भी सर्विस। तो S3 फुल एक्सेस जब हम लोग लेते हैं तो ये दो अलग पार्टीशन होते हैं, एक S3 होता है, एक S3 ऑब्जेक्ट लैम्डा होता है। So S3 का रीड ओनली परमिशन है, पॉलिसी ग्रांटिंग परमिशंस, S3 read only permission. So only that permission I provided to this particular user. So only two policies have been listed here. तो allowed services कौन कौन सी हैं? दो है, S3 और S3 object lambda. So are those services this user has last accessed or not? इसने ये services का last access किया है या नहीं? So he didn't access any services in this particular time duration. Why? Because just now I created a user, so I never logged into the user and I never go access the S3. So if I logged into that user, then maybe it will show the last access thing. I'm just logging into my console. Let me log into my console. Go to the S3 because this user has S3 read only. तो इस सिर्फ read only कर सकता है. This user cannot create a bucket. जब आप create bucket पे जाते हो, एक random name, go ahead and create a bucket. So it will give you the permission denied error. Why? Because primarily this user does not have any write permissions. Only he has the read only permission. खाली देख सकता है, पढ़ सकता है, अंदर bucket में क्या data है वो read कर सकता है, but he cannot able to create the bucket. He cannot able to create the bucket. So just now I access the S3 console by logging into the S3 user. So in a particular short amount of time, it will generate the report regarding this. The what will happen here? What it will show me in the last access information, guys? यहाँ पे क्या बताएंगा वो अभी? Because I just accessed. No, no. What it will show here? It will be showing that today only, right? Today बताएंगे, तो देखेंगे हम लोग इसको बाद में, right? So let's see some more things regarding the users. Just let me grab the things. Share again. Yes, I think it's visible now, right? So first thing that we will be discussing is the ARN. Yesterday we left from here only. So ARN. ARN is the Amazon resource name. So I also shared अभी और एक चीज बतानी रह गई मुझे. Just wait. Those who are not referring the classroom, please go ahead and refer the classroom because everything is mentioned very neatly. तो अभी देखना है यहाँ पे जब आप इधर आते हो टॉपिक्स है आपके अलग अलग बिकॉज हियर यू कैन फाइंड ऑल टॉपिक्स जब करते हो तब आपको सारी चीज़ें एक लाइन में दिखती है बट यू कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट टॉपिक्स हियर तो इंपॉर्टेंट लिंक्स में क्या होता है कि अभी सपोज अब ये ए आर एन हम लोग देख रहे हैं राइट तो ए आर एन का यहाँ पे लिंक आपको मिल जाता है सो यू कैन गो हेड एंड सी दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द ए आर एन सो लिंक भी यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाती है सपोज somebody want to see the virtualization तो virtualization के कुछ जो लिंक्स है मैंने इधर शेयर किए तो यू कैन गो हेड एंड सी व्हाट इज देयर इनसाइड द वर्चुअलाइजेशन सो पासवर्ड पॉलिसी अगर आपको देखनी है तो हाउ टू सेट अ पास अकाउंट पासवर्ड पॉलिसी
So you can just go ahead and click here. So it will show you all the information regarding the password policy. तो ये इसको आप read कर सकते हो बाद में. Are you getting the point here? Why this is more important? Links. तो लिंक से आपको एक बेनिफिट ये होता है ना कि आप इसको जब पढ़ोगे it will be good for you, because just watching the video is one thing and another one is the reading. So reading habit बहुत important है. So if you are not able to read and understand the things, so जब आप ये पढ़ के नहीं समझ रहे हैं आपको, that means you need to read more. It does not mean that you don't know how to read, right? So आपको multiple times इसको read करना है, समझना है. Because I am taking all those particular documentation only. मेरे पास कोई पीपीटी नहीं होता है कभी भी. So I will be referring only to the documents. So I am reading those documents for you and I am telling you how to read the document. तो हमारा जो सेशंस चलेंगे तो ये इसी तरीके से चलते हैं. तो इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स ही पढ़ते हैं, एडब्ल्यूएस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, सो दैट if in case in future you got some issues, then the issues will be solved by yourself only, because documentation तो कहाँ नहीं जाएगा, right? Documentation will be there only. AWS का documentation है वो तो change नहीं होता है, right? तो आप documentation पढ़ सकते हो, but if I will be taking the PPTs, then PPTs एक limited हो गया ना, वो तो बोटल नेक है, तो उसमें से आप पढ़ रहे हो तो उतना आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा. सो प्लीज रेफर टू द डॉक्यूमेंट्स इफ यू वांट टू सी द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर. जस्ट क्लिक ऑन देयर एंड यू कैन सी दैट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम हियर. ओके, तो यहाँ पे हर एक के हमने लिंक्स वगैरह दिए हैं. सो ये पेन डिक्टेशन है. So I thought that this is also one thing that I should be added to the classroom. What is there in the dictation? So introduction में मैंने सारे images डाले हैं जो भी हमने क्लास में जो भी सेशंस में होता है हमारा. तो images वगैरह मैं जो draw करता हूँ पेंट में, so the all images will be uploaded to this particular classroom. So if you click on any of the image, so you will find that what are the things that you need to see. राइट. सो पेंट में जो हम लोग बनाते हैं तो वो भी मैं इधर शेयर कर रहा हूँ. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रेफर टू ऑल दोज थिंग्स. यू नीड टू रेफर टू द पेंट्स. यू नीड टू रेफर टू द इंपॉर्टेंट लिंक्स. देन वी आल्सो हैव वीडियो रिकॉर्डिंग्स. तो ये सारी करके एक जगह पे आपको क्या करना है, आपके एक पर्सनल नोट्स बनाने हैं, राइट? यू नीड टू क्रिएट योर पर्सनल नोट्स. सो जस्ट लेट मी सी लाइक शो यू द नोट्स हियर. सपोज S3. ओके. सो इस तरीके से आपको नोट्स बना सकते हो आप. वेट. सो दिस द S3 देखो. सिंपली ऐसे आप बना सकते हो नोट्स की S3 के रिगार्डिंग. ओके, IAM का देखते हैं हम लोग, बिकॉज यू नो द IAM लिटिल बिट नाउ. वेट. आई थिंक वेट. So you can have this IAM. So you can create this type of notes, guys. So root user has the highest privileges. IAM user, what is the IAM user? Least privilege mechanism. Short में आप ऐसे notes बना सकते हो for your study purpose. So if you want I will share these notes, but this is not recommended way, because ये मेरे notes है तो मैंने बनाए हैं. So you have your own choice. You have your own documentation. So you can create these particular notes for you. So अभी आप इधर देख सकते हो कि it is possible to attach multiple policies to the group, but maximum 10 policies. Are you getting this point? So the same thing that we discussed, you can create your own notes from there. So IAM user can be attached to multiple groups at the same time. A user cannot be identified as a principal. So ये कुछ चीजें होती है जो आपको स्पेशल पॉइंट्स बोल के आप लिख सकते हो. So here it is a policy. तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हो. Yes guys. So create your own notes which will be beneficial, and it will take some time, but it will be very helpful. And please don't prepare handwritten notes. Why I'm saying that, because if you are creating a handwritten notes, it will not be that much effective. Why? Because whenever you are creating a handwritten notes, if you want to see, this is my documentation. So if I want to see some particular like guard duty,
जैसे मैं गार्ड ड्यूटी पे क्लिक करता हूँ मेरा गार्ड ड्यूटी ओपन होता है, राइट. So if I want to search like one VPC, so Control F, VPC, so it will show me where VPC is written, right. So मुझे ज्यादा कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं होती. If this same thing is written in your particular notebook, then what will happen? You need to like roll over the pages. So it is not a proper way of writing the notes. So better way, if you have the like time, then please prepare written notes or not the handwritten in the WordPad or some other way you can create your notes. So you can have this type of notes for your, like we have so many services guys. Okay, there are so many services, so you can prepare your services by the method like what I am sharing here, because I am sharing you the particular documentation also. So if you go through a documentation, देखो, you don't have to just stick to the videos only. तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं. You also have the ARN. Just wait. ARN. So जैसे हमने ARN ओपन किया तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर देयर इन द ARN. सो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. तो उससे क्या होता है ना कि आपको प्रॉपरली समझ आता है और आप अपने वर्ड्स में लिखते हो. Whenever you are putting in your own words, so after some time it is very easy for you to revise the things or just look into it, right. सो ये जो चीज है ना, क्लासरूम, इसको हैंडी रखो आप. ऐसे नहीं कि क्लासरूम में आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, किधर से क्या स्टार्ट करनी है. वेरी सिंपल. इंपॉर्टेंट लिंक्स पे आप जब क्लिक करते हो तो यू विल फाइंड ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द क्लासरूम. दिस इज द फर्स्ट. देन पेन डिक्टेशन में आपको सारे इमेजेस मिल जाएंगे. प्रूफ ऑफ लर्निंग में जितने भी POLs आपको है, और कुछ लोग क्या करते, POL दे देते, POL अटेम्प्ट किया है उन्होंने. You need to go to this particular page of POL, and here you should be. ओके, तो मुझे नहीं आ रहा है. ये टर्न इन बोल के ऑप्शन होता है और कंप्लीटेड का ऑप्शन होता है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है. ठीक है. जब भी आप POL पे जाते हो तब उसको आपको कंप्लीट किया है बोल के इधर आपको मेंशन करना होता है, राइट. तो ये चीज आपको करके आपको असाइन, मतलब ये देखो 13 पीपल आर असाइन बट ओनली 3 आर कंप्लीटेड. तो यहाँ पे आपको असाइन करना है, मतलब कंप्लीट किया है बोल के इधर मेंशन करना है आपको, राइट. नेक्स्ट इज द वीडियो रिकॉर्डिंग्स. तो एवरीडे का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है यहाँ पे, and with the description. So if you want to see that user create कैसे करते हैं, so you don't need to just go through all the videos. So why I'm mentioning the caption here, it's very important that I am user creation अगर आपको देखना है तो आप सिर्फ इतना एक वीडियो देख सकते हो, right. Whatever inside that video that I'm mentioning in the caption. So enable budget and MFA for IAM user, so IAM user and group in introduction, फिर यूजर ग्रुप कस्टम पासवर्ड पॉलिसी एंड क्रेडेंशियल रिपोर्ट. तो यहाँ पे इतना मतलब प्रॉपरली आपको सारी चीजें मिल जाती है. सो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द वीडियोस, एंड every video has its caption, so that you can understand what is there inside the video, because I know that is very difficult to understand later on, because day 1 day 2 ऐसे आते आते फिर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस आपको ये मिल जाती है, फिर वो तुमको बहुत मुश्किल जाता है, ओके, गो थ्रू करने में. So for that, you can refer to this particular thing. So you have different topics, links, dictation, and POL, वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल. सो अभी जब हम लोग टास्क भी देंगे आपको, राइट. सो न्यू टॉपिक भी इधर आएगा जिसको कि हम लोग टास्क बोलेंगे, लैब टास्क. और लैब टास्क के लिए आपको प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस भी देना होता है, जैसे कि प्रूफ ऑफ लर्निंग जैसा आपने दिया है अभी, कि जो भी आपने क्वेश्चंस के आंसर किए फॉर द बेसिक्स. IM के लिए भी अभी और POL आएगा. उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस देना है, POP. ये जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके जो भी उसका आउटपुट होगा तो उसका स्क्रीनशॉट आपको इधर शेयर करना है इन द प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस. सो इट विल बी नेक्स्ट स्टेप, विल सी दैट. ओके, IM में जब हम लोग इन डेप्थ जाएंगे, पॉलिसी क्रिएशन फिर यूजर क्रिएशन, सो तब हम लोग इसको देखेंगे, राइट. सो टुडे आई विल बी गिविंग यू अ टास्क, so that it will be there in the task here. Okay, so just let me create a topic, lab tasks. So you will find that particular lab task in the lab task particular topic of lab task. Here you will find different lab tasks. तो टेक्स्ट फाइल होंगे लैब टास्क के लिए. सो आई विल शेयर दैट फॉर every particular topics. So is there any difficulty with this particular thing? Classroom, Google Classroom. Those who didn't use the Google Classroom, please go through it. If you are in difficulty,
we can have a separate session on this, right? So we will keep that session for you if you have any difficulty, but I don't think so. So that's why I didn't mention anything here. So आपको ये पता होगा ऐसा लगता था, but if you don't know then please feel free to contact, right? So इसको हम लोग अभी remove करते हैं. Let's back to the work, guys. So the Amazon resource name. So what is the ARN? ARN is the Amazon resource name. Every resource in the AWS, every resource in the AWS will have a ARN. Will have a ARN. तो ARN हर एक resource को AWS क्या करता है? देता है. Why AWS is providing ARN to every resource? To identify a resource uniquely. To identify a resource uniquely. If you see, the ARN uniquely identifies the AWS resource. We require ARN when you need to specify a resource unambiguously. What is meaning of unambiguously? मतलब confusion नहीं कुछ. Okay, without any confusion. Such as IAM roles, policies, RDS databases, API calls. So सबके लिए वो क्या करता है? एक particular ARN देता है. So what is the format of ARN? First thing, what is the format of ARN? So format of ARN is something like that. So let me. So कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है. So are you guys able to see the format here? So the first thing is the ARN. पहले ARN सिर्फ लिखा होता है. The two particular options are separated by the colon. Two particular options are separated by the colon. The second one is the partition. Second one is the partition. Third one is the service. Fourth one is the region. Sequence fix होता है. The sequence will not be changing. Third and next one is the account ID. Here is the red. Yeah, account ID. And then we have the resource ID black color में रहने दो. ठीक है. अभी you can see here. First is the ARN. तो ARN इसका कुछ ऑप्शन नहीं होता है. So ARN is just the ARN. यही चीज लिखी होती है. So there is no value for this particular thing. There is no value for particular thing. देखो यहाँ पे ARN एक नॉर्मल इसमें है. ये इटैलिक फॉर्मेट में नहीं है, नॉर्मल है. सो एडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंटेशन रीड करते वक्त आपको ये चीज याद रखनी है कि जहां पर भी इटैलिक वर्ड्स होते हैं ना, इटैलिक इटैलिक में लिखा होता है. जो फॉन्ट होता है ना, बोल्ड इटैलिक, आई थिंक यू नो दैट राइट. इटैलिक राइट. थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा होता है इटैलिक फॉर्मेट. सो दिस इटैलिक फॉर्मेट यू नीड टू रिप्लेस बाय सम वेरिएबल्स. तो ये पार्टीशन फिक्स नहीं है, यू नीड टू चेंज दैट. सर्विस फिक्स नहीं है, you need to change that, replace those things. But ARN is a fix. That's why it is written in normal format, not in the italic format. Replace the italicized text with the source specific information. तो ये वेरिएबल होता है, स्पेसिफिक रिसोर्स का अलग अलग होता है. दैट इज नॉट अ फिक्स फॉर एवरी रिसोर्स. So fix for every resource is only one parameter here. What is that? ARN. That is written at the start of the ARN. तो ये फिक्स होता है. उसके बाद क्या होता है? पार्टीशन. अभी देखो पार्टीशन क्या है. तो बिकॉज AWS cloud is a public cloud or private cloud? Public or private? AWS is a public cloud, guys. So AWS is a public cloud. So anyone from the internet, anyone from all over the world can access the AWS, can create account in AWS, can create resources in AWS. But there are some countries, there are some organizations which do not want to be a part of the public cloud. तो उनको मतलब उनको पब्लिक क्लाउड नहीं बोल सकते, बट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर public people. So they are separated from these public people. So if you go to the, okay, so if you go to the regions tab here, so you can find different regions. Yes. How many regions, guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Right? Tokyo तक 11 हो गया. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. चलो 18 हो गया. 9 रीजन्स अभी तक एनेबल नहीं किया मैंने. 18. ये देखो
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ रीजन अभी तक एनेबल नहीं किए। यहाँ तक 18 था। 18 प्लस 9 हाउ मच? 18 प्लस 9 इज, इट इज 27। वेरी नाइस, 27 हो गया। बट what AWS documentation is saying, AWS regions, how many regions we have? How many regions we have total? 31 I think, right? So we have a 31 regions. So अपना count कितना हो गया? 27. So only 27. And what are those five regions, right? Five नहीं, कितने होते 27? Four regions. So those four regions are, where those four regions? Those four regions are reserved regions for different people. So किन के लिए reserved है वो देखते हैं. So this is separated by the partition. This is separated by the partition. एक होता है AWS regions. What are the AWS regions? The regions that you can see from the console here for the public people. So these are how many regions? Only 27 regions. दिख रहा है आपको? Only you have the 27 regions. Wait. You only have the 27 regions. Those are nothing but AWS regions. Those are nothing but AWS regions. So next is AWS slash or dash CN. AWS dash CN. This is the China regions. China region. So AWS dash CN. I think we have three or two in the China. I think AWS CN में तीन है शायद. AWS CN regions. Beijing, Ningxia are the two regions. Think we have two regions. Let me see. Ningxia एक है और ठीक है, आई थिंक दो रीजन है यहाँ पे। तो चाइना का जो मतलब AWS है वो सब सेपरेट होता है। तो उनके दो रीजन है, सेपरेट रीजन से चाइना में दिए हैं। तो दैट इज आवर सेकंड थिंग, दैट इज AWS CN। सो इधर 27 आ गए, यहाँ पे दो आ गए। अभी कितने बज गए अभी? रिमेनिंग आर टू। अभी दो बज गए ना अभी, राइट? सो AWS US गवर्नमेंट के दो रीजन्स होते हैं। AWS US गो, US गो, this also called as the go cloud. So so these regions, I think there are also, we have two regions maybe. Yes, दो ही होने चाहिए because चाइना में दो है, मतलब यहाँ पर भी दो ही रीजन होने चाहिए। Let me see. Okay, so two regions है वहां पर भी। They are not specifying exact thing here, but two regions remember. So दो region किधर आ गए? दो रीजन चाइना के थे और दो रीजन, रिमेनिंग टू रीजन आर फ्रॉम द गो क्लाउड ऑफ यूएस, गो क्लाउड ऑफ द यूएस। So tell me how many partitions we have? Three partitions. One is for the AWS, like for all over the internet or world, that is for the AWS. If you are creating your account, you will get which region, guys? You will get AWS region, not the AWS CN or not the AWS US Go. So for this, you need to make a special request to the AWS if you want to launch any resources into this particular region, China region or US Go Cloud. So if you have some requirement, then only you will be getting these regions. Otherwise, you will not get these regions. It will not show in the console also. So, so this particular thing is the partition. So how many partition we have, guys? Three. What are those? AWS, AWS CN for China, AWS Go Cloud. So this is not the like you should not be remembering all those things, but you must be knowing that there are three partitions and these partitions have different regions. So कभी कभार इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि हाउ मेनी रीजन्स वी हैव राइट नाउ। सो बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट 31 regions are there. So out of those 31, I am not able to see all the regions in my account. So I will be only able to see only 27 regions. So where are those four regions?
So your answer should be like that, that four regions are lies are differentiated by the partition, and we have different partitions for the AWS, and our account is the general account. That's why in our AWS account we only see the regions that are having partition of AWS, and two other partitions we cannot see in our console, that are AWS CN and AWS US Go. So for those two regions are reserved. So that's combiningly becomes four. Are you getting? So this type of answer you should be giving to the interviewer regarding the partition. So ये partition होता है. Are you getting any difficulty with the partition now? So for you, for your resources, what is the name of partition? AWS. AWS CN is for China. AWS US Go for Go Cloud of US. So we are not looking into that. Just you need to know that thing, that something like that is also there, right? अभी तीसरा आता है service. What is the service? Service is nothing but a service in AWS. So you have lots of service in AWS. So if you go through the compute, like you have the EC2. EC2 is the service. Lambda is the service. If you go to the databases, you have the RDS is a service. If you go to the storage, you have the S3 as a service. So that fourth point is sorry, third point is the service. थर्ड पॉइंट इज द सर्विस. समझा? पहले ARN लिखना है, उसके बाद आपको पार्टीशन देना है, जो भी पार्टीशन है वो, फिर क्या देना है आपको? सर्विस का नाम देना है. सपोज यू आर यूजिंग द AWS IAM सर्विस है, तो IAM सर्विस के लिए क्या लिखोगे आप सर्विस की जगह पे? You are putting the IAM. Very nice. You are putting the IAM in place of the service. Then comes the region. Then comes the region. Simple है. आपको जो भी region देना है वो दे सकते हो. For suppose if I am in the Mumbai region. So what region you are specifying then? AP South 1, not the Mumbai, because you need to specify the code, right? AP South 1 you need to specify, not the Mumbai. So the fourth point is the region. समझ रहे हो? Next point is the region. Region के बाद क्या आता है? You need to specify the account ID. You need to specify the account ID. Where that account ID you can see here. This is the account ID. You need to specify the account ID in the ARN. In the ARN, the fourth or fifth, one, two, three, four, fifth point is the account ID. Account ID के बाद क्या होता है? Resource ID. Resource ID is something that is related to the resource. Related to the resource. और एक फॉर्मेट होता है कि रिसोर्स टाइप आपको लिखना होता है, बिकॉज आईएम में क्या क्या रिसोर्सेस है? रिसोर्स टाइप कौन कौन से आईएम में? आईएम में आपके पास यूजर है, आपके पास रोल है, आपके पास पॉलिसी है. सो ऑल दोज आर द रिसोर्स टाइप. तो रिसोर्स टाइप जब होता है तब आपको रिसोर्स टाइप लिख के स्लैश करके उसमें रिसोर्स आईडी देना है. S3 बकेट में रिसोर्स टाइप नहीं होता है, डायरेक्टली S3 इज अ रिसोर्स, bucket is a resource, so there is nothing to specify here. Directly you can specify account ID and the bucket name. तो तब इसको रिसोर्स आईडी देना है आपको डायरेक्टली, राइट? इफ यू हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ सर्विसेज वेयर वी आल्सो हैव अ रिसोर्स टाइप, लाइक EC2 में देखो वॉल्यूम होता है, EC2 में सर्वर होता है, EC2 में और बहुत सारी चीजें होती है. फॉर दैट रीजन यू आर यूजिंग द रिसोर्स टाइप और स्लैश करके उसका नाम, रिसोर्स का नाम, राइट? यहाँ पे डायरेक्ट आप रिसोर्स का नाम लिख सकते हो, या उसका कोई स्पेशल टाइप है तो उसका टाइप लिख के उसको स्लैश करके नाम लिख सकते हो. यस, एनीथिंग यू नीड टू आस्क फ्रॉम हियर? Simple. ARN, then partition, then comes the service, which is the service. Service के बाद आता है region, region के बाद आता है account ID, उसके बाद आता है resource ID. So shall we move ahead and write one IAM policy? Sorry. ARN for the user. अभी देखना मेरे पास एक user है admin user. So guys, please tell me what should I write for the admin user? Okay. So you need to just follow the ARN. ARN colon partition क्या है? Tell me guys, partition. Partition will be the AWS. Very nice. Then service. IAM is a service. Then region. Region कौन सा आएगा? Very good. AP South 1. So IAM is a global service or regional service? हाँ. So which region you will be specifying here? Now it's difficult, right? So don't specify anything. हम लोग अभी इसको छोड़ देते. ओके, अभी कुछ नहीं लिखता हूं मैं यहाँ पे, राइट? तो हम लोग रीजन के लिए छोड़ देते, ठीक है? अभी रीजन नहीं दिया, उसके बाद कोलन देना पड़ेगा ना. यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसके बाद कोलन. तो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया ना रीजन. आई डेंट स्पेसिफाइड एनी रीजन हियर. यस, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, जस्ट ऐसे कर देता हूँ ब्लैंक.
ब्लैंक लिख दिया है मैंने। हाँ, अभी रीजन के बाद क्या आता है? अकाउंट आईडी। कॉपी कर लो अकाउंट आईडी, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अकाउंट आईडी हमने लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना है आपको? रिसोर्स आईडी। सिर्फ रिसोर्स आईडी लिख सकता हूँ क्या मैं? बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस हियर। सो व्हाट यू नीड टू राइट? you need to write a user, that is a resource type. User is a resource type slash करके what is the username? Admin is the username. Admin is the username. Are you guys getting how to write a ARN? Even people in industry don't know how to write the ARN. Yes, so you must be knowing all those things. तो यहाँ पे डैश डैश जो किया है ना उसको मैं रिमूव कर देता हूँ because I don't need that. So this is the ARN that is very similar to the one which you will get from the console. तो admin पे जाना है हमको। I just copy this ARN. मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। Is there any difference? No? सिंपल है ना? People get confused with the ARN. उनको ये पता ही नहीं होता है किस तरीके से लिखते हैं, right? But you all know that how to write the ARN because we written this ARN manually, right? हमने टाइप करके लिखा है ये सारी चीज और हमने मैच किया तो बराबर से आ गया सब चीज। यस गाइस, एवरीथिंग इज सेम सेम। ओके, नाइस नाइस। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक आपको पता नहीं है बकेट का एआरएन कैसे लिखते हैं, बट स्टिल वी विल गो थ्रू इट। सो मेरे पास एक बकेट है, डेमो उसामा एक नाम से बकेट है। सो फॉर दैट आई नीड द एआरएन। सो आर यू गाइस रेडी टू राइट द एआरएन फॉर द बकेट? चलो लिखते। पहले क्या लिखना है? एआरएन कोलन पार्टीशन, ऑब्वियसली दिस विल बी फिक्स फॉर अस। सो एडब्ल्यूएस कंफर्म रहेगा हमारा हर बार, राइट? सर्विस क्या आएंगे हमारी? We didn't studied any S3 service. Just you know the name. I told you that name of my service is S3. So that's why S3 सर्विस है। रीजन, अभी देखना कि S3 जो सर्विस है ये ग्लोबल सर्विस है। S3 is a global service. So with that, tell me guys, do I need to specify any region here? No. I should be keeping the blank. मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, बट वो उसके बाद मेरे पास कोलन था, राइट? सो रीजन के बाद एक कोलन है तो इसको तो मेरे को यहाँ पे लिखना ही है, कोलन एक लिखना ही है। फिर मुझे क्या लिखना है? अकाउंट आईडी। फिर मुझे क्या लिखना है? अकाउंट आईडी। also the buckets are unique for all the accounts all over the internet, all over the world। तो अकाउंट आईडी भी देने की जरूरत नहीं होती। इफ यू आर स्पेसिफाइंग द अकाउंट आईडी देर इज नो हार्म इन दैट, बट यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द अकाउंट आईडी बिकॉज दे आर यूनिक। हम लोग यूनिक क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें लिखते हैं, तो अकाउंट आईडी भी देने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है फॉर द बकेट्स। सो व्हाट आई एम स्पेसिफाइंग हियर, अगेन आई एम पुटिंग द अकाउंट आईडी टू द ब्लैंक। अभी रिसोर्स आईडी देने की जरूरत नहीं है आपको, रिसोर्स टाइप देने की जरूरत नहीं बिकॉज बकेट्स आर buckets only, so you don't need to specify anything, just you need to specify the name of the bucket, that is the डेमो उसामा। सो बहुत सारे लोगों को ये समझता ही नहीं है कि 3 बार कोलन क्यों लिख रहे हैं लोग। सो कभी कभार देखते हैं तो इतना अच्छे से लिखा हुआ होता है, कभी बीच में ये कोलन का गैप देते हैं, तो ये जब आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप बोल सकते हो कि बिकॉज S3 के बाद क्या है? टेल मी गाइस, सर्विस के बाद क्या आता है? रीजन आता है। सो दिस S3 इज अ ग्लोबल सर्विस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी रीजन। देन आफ्टर द रीजन वी हैव द अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी भी नहीं लिखना है हमको बिकॉज दिस बकेट्स आर नॉट लिमिटेड टू द अकाउंट, these resources are unique over the internet। तो इससे यूनिक होता है, दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई एनी अकाउंट आईडी। तो आप इधर देख सकते हो, अभी प्रॉपर्टीज में जाना है आपको, ARN देखना है आपको। सो जस्ट आई विल कॉपी दैट ARN, आई विल पेस्ट इट हियर। सो द ARN विल बी सेम और नॉट सेम है? इसी टाइप का ARN है। सो आई थिंक यू नो हाउ टू राइट द ARN। यू डोंट नीड टू राइट ARN लाइक दैट। आपको इस तरीके से ARN कभी भी लिखना नहीं है, बट आपको पढ़ना तो आना चाहिए ना। If you are reading this, then you should be knowing that why this gap, why this gap. This gap is for the region and this gap is for the account. This gap is for the account. Yes. Next, और कोई सर्विस थी, सपोज EC2, राइट? EC2 में हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज आई डिड नॉट like started the EC2, but I will just create one volume for you। I will create the volume here। ओके, तो वॉल्यूम के लिए ना एक वॉल्यूम आईडी होता है, वॉल्यूम के लिए एक वॉल्यूम आईडी होता है। सो यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई द वॉल्यूम आईडी। सो
whenever you are looking for the EC2 service, EC2 का ARN थोड़ा अलग बनता है if you want to specify the volume. So just see here, first is the ARN, then AWS partition, service is the EC2, region is AP South 1, then you need to specify the account ID, अकाउंट आईडी स्पेसिफाई करना है। उसके बाद आपको आता है वॉल्यूम, रिसोर्स टाइप इज वॉल्यूम, और उसके बाद आपको क्या देना है, इसका आईडी देना है, पर्टिकुलर इसका आईडी देना है। यस, let me decrease the font size. This is the ARN for the volume, ARN for the volume. Shall we check that ARN from internet? ARN for volume resource in AWS EC2। नो नो नो, गलत जगह पे गए। लेट्स सी, इधर भी हो सकता है। अभी देख रहे हो आप, ARN EC2, फिर रीजन, फिर अकाउंट आईडी, फिर वॉल्यूम स्लैश अपने वॉल्यूम में आईडी लिखा है। सो वी आर फॉलोइंग द सेम मेथड गाइस। यस, दिस इज द करेक्ट मेथड फॉर द वॉल्यूम ARN। तो अभी आप किसी का भी ARN लिख सकते हो। अभी in AWS you can write ARN for any service, and also you can read the ARN for any service. This is a very important one. So yesterday we need to cover this particular point, but you, some people are left the meeting, that's why I am taking today, because this is very important point for the permissions or policy perspective. तो ये एक चीज आपको समझ में आ गई अभी कि हाउ टू राइट द ARN। इज देयर एनी डिफिकल्टी टू राइट द ARN? वेरी सिंपल गाइस, राइट? सो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन एक बार रीड भी करना है बाद में। So here everything is specified, the service, the region, what is the meaning of region, how to write the region, account ID, everything is given here. Some examples are also given, ARN, IAM, account ID है, user है, slash username। SNS topic के लिए भी किस तरीके से ARN लिखना है ये भी बता दिया है। So you just need what service, in which region, what account ID, and what is the name of that particular resource. Then you can write the ARN properly. Now अभी देखना है कि कभी कभार क्या होता है ना कि while writing the policies, you want to, you don't, like you are writing some policy, right? So अभी हमारे पास ये bucket है, this bucket we have, I just remove this ARN, I have this bucket, um, I want the particular objects inside this bucket, right? So डेमो समा का बकेट है, तो इसमें का मुझे सपोज ये demo1.pem करके एक फाइल है, तो इसको ही परमिशंस देनी है। ओनली आई वांट द परमिशंस टू दिस पर्टिकुलर फाइल। Then at that time what I will do, I will just put a slash after the name of the bucket, and there I will specify an object name। ऑब्जेक्ट नेम क्या है यहाँ पे, मतलब फाइल का नाम क्या है, ये demo1.pem है। तो इसको ही मुझे सिर्फ परमिशन देनी है यूजर को, मतलब नैरो डाउन किया है मैंने यूजर को। तो यूजर कैन एक्सेस ओनली दिस पर्टिकुलर फाइल इनसाइड दिस बकेट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एक बकेट है, तो बकेट मतलब एक, आप बोल सकते हो कि एक फोल्डर है। तो फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स है। तो उनमें से आपको सिर्फ एक फाइल को ही परमिशंस देनी है। तब आप ARN किस तरीके से लिखोगे, रिसोर्स का नाम किस तरीके से लिखोगे, तो आप रिसोर्स का नाम, हम हमारा जो डिसाइडेड मेथड है ARN का, वो स्लैश करके एक ऑब्जेक्ट या एक फाइल का नाम लिखोगे सिर्फ। सपोज there are lakhs of files, millions of files that are available inside this particular bucket, and you want to give access to all those files. So how will you write that thing? Because there are millions of files, are you going to write multiple times names? No. What you are using? You are using a wildcard. Wildcard. You are using a wildcard character that is allowed for the policy element. You can write the wildcard for the policy. So wildcard, what it defines? It defines anything, it defines anything। wildcard मतलब anything। so if you want to that particular user to access anything inside this bucket, so instead of writing a particular name of the file, what you are writing, you are writing a star। what does it mean? Any object inside this bucket, if you are giving this slash and star, so you are specifying any object inside this bucket, any object inside this bucket। if you want to give permission to the to user to access the bucket, just bucket को access की permission देनी है। in that case
you are not giving access to any object inside the bucket, just you are providing the access to the bucket, then the ARN will be like this. ARN will be like this. अगर आपको इसके inside objects की permissions देनी है तब आप क्या करोगे, slash star करोगे. Are you getting this point? So this is for the bucket and this is for the objects inside the bucket. This is for the objects inside the bucket. Yes guys, simple way. If you want to give access for all the users, अभी ये ARN एक resource है, तो आपको एक पर्टिकुलर यूजर के लिए नहीं बनाना है, तो ऑल यूजर्स के लिए परमिशन देनी है. इन दैट वे व्हाट यू विल डू, यूजर स्लैश स्टार. मतलब क्या होगा इसका कि एनी IAM यूजर, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. Yes, I think it's more clear for you, right? How to read the ARNs. तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये परमिशन देनी है कि ये रिसोर्स पे कि इसमें के कोई भी यूजर्स का एक्सेस कर सके. यूजर्स मतलब क्या, एनी स्टार. ग्रुप्स, एनी यूजर ग्रुप, तो यहाँ पे स्टार. यस गाइस, वेरी सिंपल वे टू स्पेसिफाई द थिंग्स हियर. बस अभी देखो ये बकेट है, बकेट के अंडर का कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी डेटा ये ले सकता है, तब हम लोग इसको स्लैश स्टार करके परमिशन देते हैं, राइट. सो इन दिस वे यू आर, दिस इज नॉट अलाउड, राइट. सो इफ यू हैव समथिंग लाइक IAM में क्या है, यूजर है, तो यू स्टार नहीं कर सकते. सो यू नीड टू स्पेसिफाई द रिसोर्स टाइप फर्स्ट. रिसोर्स टाइप लिख के आपको स्लैश करके स्टार देना है. ये इस ऐसा आधा अधूरा स्टार के साथ वाइल्ड कार्ड इधर नहीं चलता है, राइट. In the policy, this type of star is not allowed. This type of wildcard is not allowed. You need to specify full star, not the in between stars, not allowed. Yes, guys. I think ARN is very clear for everyone. Okay. So अभी ARN पूरे तरीके से आपको समझ में आ गया है. I hope so. So what I will be doing is, अभी हम लोग ना एक चीज देखते हैं, पॉलिसी स्ट्रक्चर. AWS IAM policy structure. So if you see the partitions, तो यहाँ पे AWS partitions. So we have a group. AWS partition is a group of AWS regions and services. तो ये public AWS partition है, AWS CN है, AWS China का partition है, and AWS Go Cloud है, right? So this is the information, that little bit information that is for you, that I will be sharing into your chat. और ARN का आई थिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया है आपके साथ. सो वी विल सी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. पॉलिसी स्ट्रक्चर देखना है अभी हम. नो, बेसिक्स. सो फर्स्ट थिंग, राइट, whenever we are starting with the policy, you should be understanding how the policy is created, right? What is the policy first? Policy, it is a set of permissions. It is a set of permissions, set of permissions, set of permissions in AWS, or set of permissions for AWS resources. AWS resources. Policy is a set of permissions for AWS resources written in JSON format. Only JSONs are supported. Only JSONs are supported. So JSON language में ही policy बन सकती है, not in other languages. But AWS ने और आपको simple करके दिया है कि if you don't know the JSON, then also you can write a policies. Then also you can write a policies. So don't worry about how to write a JSON and don't go ahead and learn the JSON. Okay, so you don't have to write a JSON. So what is JSON? JavaScript object notation.
You don't have to remember that also, but still I'm giving this Java script object notation. JavaScript object notation. So I already told you that no need to remember these names and all. Just you need to see what is the policy. Policy is a set of permissions for AWS resources written in the JSON format. Written in the JSON format. So there are different types of policies that are available. So one is the identity based policy. Okay, we will look one by one because I don't want to confuse you at the initial stage. So first we will see identity based policy, and as the time progresses we will see one by one different types of policies also. ठीक है, तो अभी पहले हम सिर्फ identity based policy देखते हैं. So what is identity based policy? The policies, wait, the policies that are attached to the policies that are attached to the AWS, policies that are attached to the IAM identities. IAM identities are identity based policy. If you are remembering my previous session, so we also discussed what are the IAM identities. Yes guys, IAM identities. क्या होते हैं IAM identities? IAM identities are the user, group and the role. These are the IAM identities. User, group and role are the IAM identities. जो policies आप user को लगा सकते हो, ग्रुप को लगा सकते हो और रोल्स को लगा सकते हो, दोज पॉलिसीज आर कॉल्ड एज द identity based policies. Identity based policies. So in this identity based policies, again we have some categories. So identity based policies are two types mainly. Okay, so one is the managed policies. Managed policies. So managed policies जो होती है, managed policies, these are managed policies, right? So we can, these are something that you can reuse in AWS account. These policies you can reuse in AWS account. These policies that you can reuse in AWS account and can be attached to IAM identities. Identities मतलब क्या? You can attach it to the roles, you can attach it to the groups, you can attach it to the users. So here again categories in the managed policies. We have two different types of managed policies. What are those? AWS managed policies. AWS managed policies. In AWS, again we have this. These are the AWS managed policies are created and managed by AWS. 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 Okay, these are policies created and managed by the AWS. These are the AWS managed policies. तो AWS managed में भी AWS ने क्या क्या है और कैरेक्टराइजेशन किया है, मतलब कैटेगरीज बनाया है. So in AWS managed policy we have two types. What are those? AWS managed job function policies. AWS managed job function policies. और दूसरा कौन सा है? ओहो, AWS managed job function policies. Next one is the normal AWS managed policies. Normal AWS managed policies. In the AWS managed policy, we have two.
that are AWS managed job function policies. This will be categorized with respect to the job function. मतलब क्या कि admin है, administrator, then we have the DB, database administrator, then if you have the um, other people, right? So depending upon the job role, job profile, this particular policies have been created. Next is the AWS managed. AWS managed मतलब S3 full access, right? Then EC2 read only. So these all are nothing but a AWS managed policies. Are you getting the difference between them? Administrator, these are some type of job functions, right? So this is the AWS managed policy. Next is the customer managed policy. Customer managed policies. So these are the policies that are created and managed by the customer. These are created and managed by customers. Created and managed by the customers. So these are the customer managed policies. And we also have a one more policy. If you don't want S3 full access, you want to narrow down your access control, then what type of policies you will be using? You will be using the customer managed policies. You will be using the customer managed policies. अगर मुझे S3 में एक पर्टिकुलर बकेट का पर्टिकुलर एक्सेस ही करना है तैयार, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कस्टमर मैनेजर पॉलिसी बनाते हैं, एंड दिस पॉलिसीज यू कैन रीयूज, राइट? दिस आर you can reuse in AWS account. You can reuse these policies in AWS account. ठीक है, ये reusable होती है. These policies can be reusable in the AWS account. In the AWS account. Customer manager. अभी managed policy हो गया. अभी next आता है कौन सा? We also have a inline policies. We have also have a inline policies. Inline policies. So here, if you see inline policies, these are direct policies created for IAM identity, or you can say that direct policy created for resource, created for identity बोल सकते हो, छोड़ो, ठीक है, created for the identity. These are the policies you are directly created for identity, can be used for identity, used for identity. So this is, you cannot use this policy in AWS account. These are these policies are not reusable in AWS. So you cannot reuse these policies. These are one-to-one relation, one-to-one relationship. These having the one-to-one relationships. So resource के लिए जो भी आपने create किया है उसी के साथ ये होता है. If the resource got deleted, if a resource to which this policy is attached got deleted, then what will happen? Tell me, guys. Deleted, then policy also removed with the resource. So it will not be remain. Okay, it will be deleted. It will be deleted. तो ये रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, मतलब ज्यादातर ये इनलाइन पॉलिसीज होती है, वो हम लोग पर्टिकुलर आइडेंटिटी पे लगाते हैं. इफ द इसको ये बोलना गलत है, 2 मिनट. So you might be get confused with the resource based policy again. If identity to which this policy is attached gets removed, then policy is also removed from the removed with the removed, then that also gets removed. Are you getting this point, guys? So what are the policies we have? Identity based policy, the main one.
So in the identity based policy, we can attach that policy to the user resource or user group or role. In that identity based policy, we have two types. One is the managed policies, another one is the inline policies. In the managed policies, we have two types. One is the AWS managed policies, another one is the customer managed policy. In the AWS managed policy, we have job function type of and normal. So in the job function type, we have specified the policies by the job function or job roles. In the inline policies, you can create a policy for particular identity. It is not reusable policy. You can use those policy only with the resource, only with the resource. So if you see here, I am just hold on for 1 minute. Just hold on for 1 minute. So in the policies, if you see here, a टाइप में देखो आपको AWS मैनेज्ड में दो है AWS मैनेज्ड पॉलिसी नॉर्मल एंड AWS मैनेज्ड जॉब फंक्शन टाइप ऑफ पॉलिसीज यस गाइस सो इफ यू क्लिक ऑन द AWS मैनेज तो आपको इस टाइप के सिंबल्स दिखते पॉलिसी के सामने what are those symbols that are the symbols of AWS showing you that these are the AWS managed policies okay so if you go with the type of AWS managed job function तो आपको यहाँ पे जॉब फंक्शन दिखते हैं देखो सपोर्ट यूजर है ये view only billing database administrator I told you DBA then read only access system administrator access all those are nothing but a AWS managed job function type of policies so we have these many AWS managed job function policies ओनली 11 पॉलिसीज आर देयर फॉर द नेटवर्क एडमिन है तो उसको ये दे दो डेटा साइंटिस्ट है तो उसको ये दे दो सिक्योरिटी ऑडिट है तो ये दे दो बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट लाइक बिकॉज मेनी पीपल हु आर एडमिनिस्ट्रेटर दे विल रिक्वायर दीज मेनी राइट्स दीज मेनी परमिशंस तो एडब्ल्यूएस ने क्या किया इसको कंबाइन करके एक पर्टिकुलर पॉलिसी बना दी विथ रिस्पेक्ट टू द जॉब फंक्शन सो यू कैन यूटिलाइज द जॉब फंक्शन पॉलिसीज इन योर यूज केस नेक्स्ट इज द टाइप इज कस्टमर मैनेज अभी कस्टमर मैनेज के सामने आपको कोई सिंबल नहीं दिखता है फॉर previous two types of AWS managed you have the symbol if the symbol is not there that means what type of policy is this these are the customer managed policies these all are the customer managed policy even you can see here type is the customer managed policy is it possible to see the inline policies here guys is it possible to see the inline policies here? No. You cannot see here inline policies. Only inline policies will be attached to the user group or roles and those could be only utilized or attached to one-to-one relation. So इस user को policy बनाते हो आप तो इस user के लिए ही वो policy होती है. If the user got deleted, that policy also went away. Yes, guys, I think we're done with the today's session, right? So please go through the session and please understand the concepts of ARN all because it is very important when you are writing something policy then ARN is the most critical point. So ARN बहुत जरूरी होता है. Many people don't know how to write the ARN. Please go through the ARN. Then it will be helpful for you to write the policies in the tomorrow session. So tomorrow session will be mostly related to the policy writing. Yes. So we will stop at this point, guys. Thank you for attending this session. We will continue from tomorrow same time. Thank you.